What's up everybody? Welcome to Insanis TV. This is the most craziest TV you're gonna find on YouTube. और आज हम पहुंच गए हैं Canton House, the Chinese restaurant which is there in Mira. सारी वेराइटीज है यहाँ पे. स्टिल डिसाइडिंग क्या खाए. Baby, it's all you ever said with baby. स्टार्टर में ऑर्डर किया है क्रिस्पी सेजवान चिकन. Yeah, maybe I'm to blame, going insane, thinking I can change ya. Yeah, or is it just a game that I can never play and your love's a treasure? But someone did I ever do you wrong? The ambience is very good. Lighting structure भी बहुत अच्छा है. Table is wide and spacious. Let's see food आने के बाद बताते हैं टेस्ट कैसा है. Focus on the stats, forget looking back, but for real it's like how I'm moving on ya. I don't know what's going on, it's on my mind. Why can't let go? Something that never was, holding on love that I never lost. Cause it won't know, it never was mine. Crying over ghosts, but it never was alive. Okay, खाना आने के बाद जैसे ही सबसे पहले प्लेट्स आते हैं, सबसे पहले आपको करना है ये. गार्लिक ज़्यादा है. Tell myself I better want somebody alive. फिलहाल चल रहा है स्टार्टर्स जो कि फ्री बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे आओगे खाना खाओगे कॉम्प्लीमेंट दिया जाए. स्टार्ट किया है क्रिस्पी सेजवान चिकन. टेस्ट इज सरप्राइजिंगली गुड. द चिकन इज क्रिस्प. काफ़ी जो सॉफ्टनेस है, एक थिकनेस है, और साथ में जो बॉल्स है वो भी काफ़ी एक अच्छा टेक्सचर दे रहे. इट्स बिट स्वीट एज वेल. स्टार्टर्स इनका काफ़ी स्वीट है, विच इज़ व्हाट आई एम एंजॉयिंग राइट नाउ. Makes me wanna fall in love. Don't stop now, just get ready. Move like a pro girl, it ain't no hobby. ओके, तो यहाँ पे ये लोग वेज पैटीज बेच रहे हैं वॉन्ग टोंग के नाम से, जो कि एक्चुअली में बहुत क्रिस्पी है, टेस्टी है. अंदर एक सब्जी भी है और इट्स एक्चुअली वेरी गुड गाइस. नेक्स्ट डिश ऑर्डर किया है पेकिंग राइस. नाम से इंटरेस्टिंग लग रहा है, बट क्या है बेसिकली मुझे भी नहीं पता. आने के बाद खा करके टेस्ट बताते हैं आपको कैसा है. Some people might think you're sleazy. You're so fine, but you make it look easy. So much you can make a man read. So don't stop, go ahead and get freaky. You got me wanting to be with you. ये है पेकिंग राइस विथ सूप यहाँ पे. Let's see. It's damn hot, but the taste is very good. The rice is soft and spongy. Your curves are making my dreams come true. So यहाँ पे राइस में बहुत ही ज़्यादा सेजवान मिक्स किया है गाइस. बहुत ही ज़्यादा सेजवान. No hobby, looking so good, gotta tell somebody. Blows my mind when I see a hot body. Hot body. Makes me wanna fall in love. Makes me wanna fall in love. तो यहाँ पे है मेरे पास मलेशिया से आया डायरेक्ट मलेशियन नूडल्स. It's a pasta-like noodles and it's damn good. Yeah, मसालों का फ्लेवर भी इन्होंने it's quite okayly मिक्सचर किया है. It's good. मेन कोर्स के बाद भी हमने एक और स्टार्टर्स मंगाया यहाँ पे. ये है ब्रेडेड कॉटेज चीज़. इट्स एक्चुअली डिफरेंट. स्नैक्स जैसा टेस्ट है, क्वाइट सॉल्टी एज वेल, और पनीर स्टफिंग के अंदर. गुड, कुछ अलग वैरायटी है. Yeah, maybe I'm to blame, going insane, thinking I can change ya. Yeah, or is it just a game that I can never play and your love's a treasure? But someone did I ever do you wrong? Give me a reason from gone. I'm focused on the stats, forget looking back, but for real it's like how I'm moving on ya. I don't know what's going on.
let go, something that never was. तो फाइनली खाना हो गया खत्म. अब वेट कर रहे हैं बिल का. बिल भरना जरूरी है क्या? नहीं ना. सोच रहे बिना बिल भरे ही निकल जाए, बट भरना पड़ेगा. No, it never was mine. Crying of a ghost, but never was alive. It all went wrong, but never was right. Tell myself I यहाँ पे माउथ फ्रेशनर की जगह एंडिंग में दिया जाता है ये पल्स, जो कि नमकीन नहीं है, ये स्वीट भी नहीं है, आम का फ्लेवर है, खट्टा खट्टा. So guys, that was the video for the day. If you like the video, make sure to give it a thumbs up. Canton House, Mira Road. और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, ताकि इस तरह के अमेजिंग फूड ब्लॉग्स आपको देखने मिले. फूड ब्लॉग और अदर प्लेस ब्लॉग्स एंड अदर अमेजिंग ब्लॉग्स as well. So stay tuned guys, eat healthy and stay blessed. Yeah, maybe I'm to blame, going insane, thinking I could change ya. Yeah, or is it just a game that I can't even play and your love's a treasure? But someone did I ever